Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel, The United Road. After a week, exactly after a week, last week एक stream किया था मैंने यार, and after that I got very sick. ठीक है, so that was a Champions League night. गला अभी भी थोड़ा सा गया हुआ है, but rest, everything is good by the grace of God, and hopefully यार throughout the season. ठीक है, काम की वजह से अगर स्ट्रीम्स मिस हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन स्ट्रीम्स बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज. तो यार वही वाली बात है, दो तीन चीजों पे बात करेंगे. इंटरनेशनल ब्रेक है, सो व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, इन जनरल फुटबॉल पे भी ज्यादा कुछ नहीं है, बट यूनाइटेड पे अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. फॉर अ चेंज अभी सब शांत है, सब शांत है. गौरव भाई क्या हाल चाल? आयुष्मान भाई आई एम फाइन, हाउ आर यू? रन भाई बिल्कुल, ऑलवेज ग्रेट टू बी बैक यार, ऑलवेज ग्रेट टू बी बैक. और जब यूनाइटेड नहीं है ना, सो स्ट्रेस थोड़ा कम है in terms of we are not going to lose because we are not playing right. Anjil bhai welcome. Badhiya bhai, badhiya bhai. Bhai finally I can say I am up to the mark. ठीक है, गला थोड़ा सा गया हुआ है बट बाकी एवरीथिंग इज फाइन. इंद्रजीत भाई सेलिंग की कोई न्यूज नहीं है. सेम ओल्ड प्लेयर्स कमिंग आउट इन द मार्केट, रिसाइकल न्यूज. अभी हो चुका है, तभी हो चुका है, नो वन गॉट अ डेट. ठीक है, नो वन गॉट एग्जैक्टली एनी क्लू ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. भाई डेविड बेकहम वाला भी सारी वही वाली बातें है कि अगर शेख जासिम आ जाएगा तो ही विल मेक डेविड बेकहम द एम्बेसडर ऑफ द क्लब. क्या बोल दूं मैं? शिवम भाई थैंक्स अ लॉट, रियली मीन्स अ लॉट मेरे भाई. क्या हालचाल? हेलो भाई. आई एम फीलिंग फाइन, आई एम फीलिंग मच बेटर. लास्ट वीक तो मेरे लगे पड़े हुए थे भाई. मैं ठीक हूँ संकेत भाई, हाउ आर यू? रैशफोर्ड डाउनग्रेड डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी रीजन हो. ठीक है, whether he is not able to play with a striker or whatever it is. ठीक है, when you are a player who is rated so highly, you have to play with everybody. ऐसा थोड़ी है भाई कि तेरे चक्कर में स्ट्राइकर नहीं खिलेंगे, cannot happen. जय पशुपतिनाथ अमन भाई, क्या हालचाल? भाई I am so relieved, I am so happy to be back on stream. You have absolutely no clue. You have absolutely no clue, I'm telling you. Too early to say, too early to say. You know, De Gea I have taken for 5 years यार. What are you guys talking about on other parties? अगर इस लॉजिक से जाए फिर तो De Gea is one of the worst keeper that ever played for us. ठीक है, too early to say. Ali, thanks a lot. How are you? How are you? ध्रुव भाई बिल्कुल बढ़िया. हाउ आर यू भाई? मेरे हालचाल बढ़िया है, अपार्ट फ्रॉम माय थ्रोट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. Of course guys, जो भी whoever joins in, I always say make sure that you share the stream, you know, among your friends. जो भी यूनाइटेड फैन है यार आ जाएगा. You know, we are here to talk. It's as simple as that. Ooh, this bhai, this absolutely. Same here अनिकेत भाई. Always great to be out here. नहीं भाई, इन चक्करों में बीमार नहीं होता मैं. आउट ऑफ एवरी रीजन इन चक्करों में बीमार नहीं होता मैं. See, United players, they have definitely downgraded few of them, and I really hope they pick up their game. You know, whatever the reason is, they have to pick up. There is absolutely no excuse. You know, this is happening, that's why we are not able to perform. No, absolutely no excuse at this point of time, to be very honest. Neon, thanks a lot, man. You know, as I said, I love streaming. You know, whether it's 30 minutes, whether it's 3 hours, it's always great to have, you know, people out here, and it's always great to talk about the club that we absolutely love, United. So it's always great, always great. भाई गोवा में तो मेरे को आधी तो जगह का भी नाम नहीं पता था. You know, because the trip was planned by a friend, I went along. Definitely feeling a lot better, Ali.
a lot better. And guys, already Shivam bhai, Ali and Neon, thanks a lot to everybody. भाई तबीयत खराब थी, अब रेगुलर दर्शन होंगे, बट वर्ल्ड कप है तो काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा. जिस दिन नहीं आऊंगा स्ट्रीम पे उस दिन पहले ही बता दूंगा. अरे दीपेश भाई, गुंजन भाई, क्या हाल चाल? भैया अब आपसे थोड़ी छुपा है कुछ. कैसे हो भैया? ऑल वेल तन्मय भाई, थोड़ा सा गले का है बट वो चले जाएगा. इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. भाई एंड में होएगा दैट वी आर गिविंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू जॉनी वांस. ठीक है, दैट्स व्हाई आई डोंट इवन गेट इनटू द नेम्स. ठीक है, लिंक होने दो. लिंक, वी गेट लिंक टू लॉट ऑफ प्लेयर्स एवरी ईयर, सिंपल एज दैट. We have to cope. As I said, when it comes to Onana is very much experienced. I have absolutely no problem if Onana goes on the bench. Few players you can put on the bench, then only you will know whether the others you have, they are good enough or not. It's as simple as that. Hopefully. टॉपिक पे ही है भाई. जान भाई क्या हालचाल? होपफुली संदीप भाई, फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, थोड़ा सा गले के है बट बाकी एवरीथिंग इज फाइन फॉर नाउ. अरे कफू भाई, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? स्वैप तो नहीं करूंगा भाई मैं, नेवर एवर, बिल्कुल भी नहीं. किएजा ने कोई झंडे नहीं गाड़े. आई विल गो फॉर नेटो. आई पर्सनली विल गो फॉर नेटो. भाई यू, सिंपल सी बात है, द अमाउंट दैट वाज पेड फॉर बेलिंगम वाज पेनीज. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई डोंट प्रिडिक्ट भाई, आई नेवर प्रिडिक्ट. भाई दोनों का ना गेम डिफरेंट है. दोनों का गेम डिफरेंट है, प्लस बोथ, यू नो, वी कैन हैव बोथ ऑफ देम. हम दोनों को ले सकते हैं इफ वी एक्ट स्मार्टली. बिल्कुल भाई, जल्दी मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है. Maybe, you know, when you are a player who has barely played with a striker, it takes some time to get into the system. ठीक है, जहां पे you have been the main source of goal and assists for like 3 or 4 years out of 5 years. So same here भैया, 2 CBs we will need. 100% 2 CBs हमें चाहिए होगा. मेक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा. समीर भैया, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. विंटर में जाता दिख रहा है मुझे. दीक्षांत भाई क्या हालचाल? ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू आउट हियर. डेफिनेटली सरप्राइज्ड मी. ठीक है, स्टिल 8 games ओनली इन द सीजन, बट ही हैज डेफिनेटली सरप्राइज्ड मी. ठीक है, आज लोग बोल रहे हैं लिवरपूल वाला गेम नहीं जीतना चाहिए था. ठीक है, नहीं जीतना चाहिए था यार, बट लॉट ऑफ डिसीजंस हैव गॉन अगेंस्ट अस एज वेल. ठीक है, हमारे अगेंस्ट भी नहीं जीतना चाहिए था, बट यू नो, इवन if decisions are going in your favor, you have to make it count, and they have made it count. भाई देखो, too early to say यार. He has not even made a proper 90-minute start for United. तो बुस्केट्स के साथ कंपैरिजन करना is, you know, the outright madness at this point of time. अभी नहीं करो यार. ठीक है, बन सकता है, बन जाए, हम चाहेंगे बन जाए यार, बट इफ यू आर basically, you know, comparing a 18-year-old with one of the best that ever played the game, won everything, I think it's very, very, you know, pressurizing on the youngster. भाई डेंगू टेस्ट करा लो. डेंगू इज ऑन द राइज. मैंने भी डेंगू टेस्ट कराया था, एंड आई विल ऑलवेज टेल यू गाइस कि अगर 1 हफ्ते का फीवर है तो यार करवा लो. मेरे को 2-3 दिन के लिए था, 3 दिन के लिए था, बट आई वाज नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क. Hello, Shanbhai. Spurs title challenges, not in my opinion. Not yet, Ali. I think one attacking injury, you know, one injury to their attacking players, I think they will be in the mud. If they have Madison or someone like Son injured, I don't think they have anybody who can come and replace them. But let's see.
बिल्कुल, मैं तभी बोल रहा हूँ, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ वी एंड अप गिविंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू समवन लाइक जॉनी इवंस. नहीं भाई, नहीं, फालतू की बातें हो रही हैं ये. पीपल टॉकिंग अबाउट न्यूज कि भाई ambassador बन जाएगा and all that. It's not gonna happen. Ambassador role is for him once we have someone like Qatar at the helm. We don't have Qatar at the helm at this point of time. So absolutely. See, the thing is, he's giving the players, go out and express yourselves. They are doing it. So I'm definitely surprised. But then, as I said, 8 games is a very small sample size. Best midfield three. It totally depends from game to game. Like if I am playing against the likes of Liverpool, I will go with Bruno, I will go with Amrabat, and I will go with Casemiro. If I am playing against someone like Everton, then I will go with Casemiro / Amrabat with Eriksen. So, well, they are playing much better. Ali, they are playing much better without Kane. However they are managing it, they are managing it. It's for everybody to see. भाई इसमें तो एक ही विनर है, दैट इज आर्सेनल, और तो कुछ है भी नहीं. सीरियसली स्पीकिंग, अपार्ट फ्रॉम देम देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर सेकंड चॉइस. भाई देखो, अवेलेबल होने वाली बात होएगी, ठीक है. आई विल रादर गो फॉर समवन लाइक नेटो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है इन द प्रीमियर लीग. दैट्स माय पर्सनल चॉइस, क्योंकि दोनों ही इंजरी प्रोन है, वेदर इट्स किएजा, वेदर इट्स नेटो. What do I think of Arsenal versus City game? I think Arsenal absolutely nullified City. They barely did anything in the entire game. That's what I think. Arsenal won by a lucky deflection, but they won't complain. 13 months as a member. Congratulations, Merlin. Well, time flies. Time flies. नहीं होने वाला भाई. Maguire को तो we want to sell. Maguire doesn't want to leave. क्या कर सकते हैं? We cannot do anything. We will try again next year. Let's see. A reason of inconsistency, definitely injuries. Definitely injuries. If people want to talk about, you know, anything else apart from injuries, I think they are in for a rough awakening at this point of time. दो बंदे नहीं है यार सिटी के. City are missing KDB and City are missing Rodri. And look at the way their gameplay is suffering. We barely have played like 2 games with the same 11 that the manager wanted. क्या बोल सकते हैं? Ahmad, I don't rate, to be very honest. I don't rate Ahmad. And I won't be surprised if he is the one who is sent out of the window. Not this season, but in the upcoming seasons. भाई चलो, साका की बिना they got the job done, but they were definitely struggling on the right hand side. ठीक है, साका तो है यार. देखो, साका is one of their best players without a doubt. Amrabat plus Casemiro plus, नहीं भाई, अभी तो राइट हैंड साइड पे आई विल गो विथ माउंट. नहीं, दे आर प्लेइंग देयर ओन स्टाइल. आर दे विनिंग? हमारे अगेंस्ट छोड़ दो यार, हमारे अगेंस्ट तो कोई भी आके जीत जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नो, दे आर नॉट विनिंग एज सच. स्टार्टेड वेल, बट एक दो इंजरीज के बाद लुक एट देयर परफॉर्मेंस डिक्लाइन एज वेल. तपिश भाई क्या हालचाल? थैंक्स अ लॉट मेरे भाई, क्या हालचाल भाई? आई एम वेरी हैप्पी. And if you are not letting Alvaro play next season, in and around the team, sell him. That's what I'm going to say. Exactly, bhai. Dalvin bhai, thanks a lot. Fateh bhai, I'm fine. How are you? Gale ka thoda sa hai, but it will be fine. When we will see our best 11? I think after December. I don't see us having our entire 11, 100% before that. Shaw might be back in November. We all know Leach has gone through 3 months, so I don't see him coming back before January. Ban Visakha will be back inside a month.
Same can be said for Kobe Manu. But as I said, like fully fit 11, I think in January. He is getting to the pace of the Premier League. थोड़ा सा time देना पड़ेगा. Sure, back in training, but even Kobe Manu is back in training for 3 weeks, Ali. So just because they are back in training doesn't mean they are ready to play. It will take some time. Exactly. Inacio in winter by very realistic, but then with a club like United, you never know. भाई ये frustration तो मेरे को भी है, and I really hope and I pray that we don't see Bruno on the right hand side. Play Mason Mount, no problems at all. No problems at all. कुबो को एक shoulder to shoulder में यहाँ का defender खा जाएगा. We have seen lot of players like Kubo absolutely giving up the baton in Premier League. Definitely going with McTominay's brace because we won the game. Just because of that. नहीं करूंगा भाई. It's not about money. We have leeches. मुझे पैसे से मतलब नहीं है भाई. मुझे उसके रोल में कौन मिल रहा है मुझे उससे मतलब है. सिंपल सी बात. Yeah, that's why I said, that we at this point of time need to get to that level. Yes, they are trying to, but they are not succeeding. तो मुझे try वाला formula logic नहीं समझ में आता यार. If you have a certain role, you should be playing. As you said, you should be playing in every role, regardless of whether the player is injured or not. At times, it can be a big change, but not all the time. Like the way you lost against Crystal Palace, you should not have lost against Crystal Palace. Simple as that. Exactly, that's our problem. Varane का injury का कुछ नहीं है guys. Varane will be back very very shortly. He is getting somewhere lost because, as I said, he has barely played his playing 11 that he wanted to play. Whatever he thought, whatever he is trying to get from this team, if he is not having a proper players, he is not going to reach that level. It's as simple as that. भाई मुझे तो ओनरशिप का अभी तो जो भी है, no one got an exact date. यार डेविस के साथ एनी फ्रिकिंग डे यार, एनी फ्रिकिंग डे. भाई हमारे पास बंदे कहाँ हैं खेलने वाले? किसके साथ प्लेइंग स्टाइल बनाओगे? Who are you going to have a playing style with? Amrabat as left back. इसके साथ बनाओगे प्लेइंग स्टाइल? ना तुम्हारा लेफ्ट बैक फिट है ना तुम्हारा राइट बैक फिट है. How are you going to have a play style? You have your both center backs injured. How are you going to have a playing style? भाई वही है ना, with them we could see, चलो ठीक है भाई, बंदे बॉल आगे लेके बढ़ रहे हैं. You are having to play left back Amrabat को. What are you going to do? मैं नहीं लूंगा Chiesa. I won't take Chiesa. I will take Pedro Neto any day. भाई एक बंदा था यार, लफेक, Enzo Lafake. He could have played that role, but unfortunately he signed for a different club. And वही वाली बात है यार कि सीएम को हम अपने रोल में किस तरीके से देख रहे हैं. नहीं भाई, क्रिकेट का वॉच अलोंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. एंड आई विल बी कवरिंग द गेम. मैं काम कर रहा हूँ सैटरडे को भाई. बिल्कुल भाई, देखो ये चीज है, बट हमेशा ये नहीं बोल सकते कि डिजर्वी इज फाउंड आउट एज वेल. डिजर्वी शिप 6 गोल्स अगेंस्ट विला. ठीक है, यूरोपा में 2 में से 1 ड्रॉ है, 2 मैचेस में 1 ड्रॉ है, 1 लॉस है. तो कतार का भाई अभी कोई सीन नहीं है. इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स डेट कोई सीन नहीं है, किसी को पता नहीं है. I want transition यार. And transition doesn't mean कि तुम बैठ जाओ and try to hit them on the counter. Counter is different. Transition is different.
People need to understand that. As I have said before, if we keep our players fit, we are finishing in top 5. Otherwise, फिर तो भूल जाओ यार, फिर तो nothing can be expected. जब players ही नहीं है, फिर क्या कर सकते हो? Still just 8 games and it's just 7 or 8 points. Hello Shubhad bhai. भाई कतार आना तो चाहिए. Every news that is coming in, it's definitely Qatar. Bhai, it's not about club of our stature. It totally depends on whether our manager is getting backed or not. हमारे क्लब का क्या स्टैचर है? झंडू भर का नहीं है. अभी हमारे क्लब का क्या स्टैचर है? कुछ नहीं है. You can have a club का स्टैचर वाला talk when you have a proper owner. हाँ, if you have someone like Sheikh Jassim, if he is backing the manager with everything, and then the manager is not delivering, out. Then I will talk about possession and control and all that fancy terms. Exactly. That's our position at this point of time, unfortunately. भाई we are not भिखारी. हमें दिखाया जाता है एज अ भिखारी, क्योंकि पैसे तो वो निकाल लेते हैं ना भाई. एज आई सेड, दोनों मैनेजर आर मैनेजिंग मिड टेबल क्लब्स विदाउट प्रेशर. ठीक है. So if they go out and they can come up with bigger wins over City, over Arsenal, then I will talk about who is better. भाई 2-3 साल तो नहीं लग रहा भाई. 2-3 साल तो नहीं लग रहा. Ali, that's the problem. We do absolutely fuck all behind the scenes. We have absolutely no clue of what's going on. We just go over there and we just like get whatever you want. Whether that player fits in the system, whether that player wants to play or not, we have absolutely no clue. No one can play. You can say Bruno can play. उसके अलावा कोई नहीं है भाई. See, the thing is, every top club at this point of time is focused on winning the game. उनको विन कैसे मिल रहा है उनसे उसको फर्क पड़ता है. That's it. भाई, I would still love to see him go out and express himself. And what a good chance he had. 2 महीने में उसका, he would have got a very good run with the team. And we could have known about how good of a player Sancho is. But नहीं, भाई को खेलना नहीं है, भाई को परफॉर्म नहीं करना, भाई को सॉरी नहीं बोलना. मेरे हिसाब से अल्वारेज नहीं देगी सिटी, unless or until he puts up a transfer request. It's as simple as that. भाई अगर हमें 50 प्लस मिल जाता है तो that's amazing. Honestly speaking, I have always said, if a 40-45 million bid comes in, let him go. Otherwise, he's decent squad player. मैं भी ठीक हूँ भाई, गला थोड़ा खराब है बट रेस्ट इज फाइन. बिल्कुल मारिए गुंजन भाई, 100%. मैं बॉलर है ही नहीं इनके पास. सॉरी, ऑफ टॉपिक अ बिट, बट दे डोंट हैव बॉलर्स. ठीक है. एक इनके पास 20 साल का है, एक ये मधुशंका बैंग एवरेज बॉलर. ठीक है. तीक्षणा है तो तीक्षणा के अकेले दम पे थोड़ी वर्ल्ड कप खेलोगे यार. एंड दैट ऑन अ बैटिंग ट्रैक. It's not gonna happen. Simply not possible. He is already benched by the manager at halftime. ठीक है. Every player needs to understand. ठीक है. चाहे वो रैशफोर्ड हो, Rashford got benched at 60 minutes and I think that's a very very sensible decision. ठीक है. अगर कोई नहीं खेल रहा है भाई, so don't try to keep playing that player.
Let them get some rest for 25-30 minutes. I would rather see someone like Garnacho for 30 minutes than anybody else. Not at all. Zero. No chance at all. No chance at all. This guy puts Mourinho to shame in terms of playing boring football. I would never take Simeone at the club. When Sancho, see, the thing is, I'm not saying that Antony is a world beater, but when Antony is there, you can see the efforts defensively, defensively. And look at the way we lose our structure when Antony goes off the pitch. Because he keeps on working hard, he keeps on, trying to get the ball, he keeps on helping the defenders. I have never seen Sancho do it. I would love to go out and see a healthy competition and Sancho coming out and performing and all that. But he has not impressed any United fan. Any United fan. It's as simple as that. Mourinho any day. ठीक है भाई, फेवरेट है, बट सामने वाला भी तो कुछ करे, जो उसको रोल मिलता है उसको उसमें तो जस्टिफाई करे. आई एम नॉट सेइंग कि भाई एंटनी को ब्लाइंडली 90 मिनट्स खिलाते रहो, बट गो आउट एंड परफॉर्म ऑन द पिच ना. गो आउट एंड परफॉर्म ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड. फीफा खेलना है तेको, रोना है तेको बैठ के, फैमिली में कंप्लेन करनी है, बट खेलना नहीं है. फॉर हाउ मच? Silva for how much? Anybody who hypes up Silva, I just ask one question. How much for Silva? I said this before as well. Give some time to Mount. He will settle in. Absolutely, भाई. सूरज भाई, फिलहाल के लिए ऑल गुड. थैंक्स अ लॉट. फिंगर्स क्रॉस्ड. गला थोड़ा भी खराब है, बट ETH एनी डे, एनी फ्रिकिंग डे. क्या उखाड़ा नागल्समैन ने? What has Nagelsmann done? I would take Inacio and Silva for 50 million. I will take a gamble. हमें भाई, to be very honest, we need both of them. हमें 2 सेंटर बैक चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों. अगर इनासियो भी लाते हो तब भी तुम्हें या तो टोडीबो या सिल्वा लाना पड़ेगा. इनासियो गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन लेफ्ट फुटेड. 50 मिलियन में आई विल टेक अ गैम्बल विद समवन लाइक एंटोनियो सिल्वा. 70 मिलियन का गैम्बल नहीं है वो. इट्स एज सिंपल एज दैट. भाई, ही कैन डू दैट. आई हैव सीन हिम डू द पासिंग, आई हैव सीन हिम डू द क्रॉसिंग. उसको और करना पड़ेगा. शॉट भी लेना है तो ले, बट थोड़ा सेंसिबली ले. सारे पोर्चुगीज उठाएंगे अब हम. ETH और ट्यूखल. तालिबान बॉल नहीं देखना यार मेरे को. इवन दो ही वन, वी ऑल नो हाउ ही वन, सो आई विल गो फॉर ETH. अरे भाई, जनवरी की बात ही कौन कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम बेच रहे हैं ना प्लेयर. वी विल गेट रिड ऑफ सांचो. टाइट पर्स हर बार नहीं होता ना भाई. लास्ट ईयर वी स्पेंट अ लॉट. मतलब ये वाला विंडो नहीं, इसके पहले वाला. अगर सेंसिबली डील करे तो आ जाएंगे. एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली चाहिए. ऑल गुड फॉर द टाइम बीइंग सैन भाई. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन. सिल्वा फॉर 50 मिलियन आई विल टेक अ गैम्बल यार. ठीक है भाई, मुझे नहीं है ट्यूकल पसंद. ट्यूकल हैड वन बिग मोमेंट, बस दैट्स इट. मैं तो वो भी नहीं रख रहा. भाई, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग पोस्टोग्लू. ठीक है, if he can win a trophy with Spurs, I will definitely put him over ETH, but not now. No chance at all. 8 गेम के बदौलत मैं उसको
एंड वेयर यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रेशर, कोई चांस ही नहीं है ETH के ऊपर जाने का। सांचो को जनवरी में मे बी डॉटमंड यार, मे बी इन अ यू नो डील विथ यूवेंटस, माइट बी किएजा हमें ऑफर हो जाए, लेट्स सी। नहीं प्रशांत भाई अभी कुछ नहीं है। Say more that everything has been done, but we are waiting for a final date. That's what's happening. भाई देखो सेल होगा, सेल 100% होगा, सेल में मुझे डाउट नहीं है। इट्स जस्ट नोबडी नोज द एग्जैक्ट डे, किसी के पास वो नहीं है, सिंपल सी बात। हेलो रजत भाई, क्या हाल चाल? एग्जैक्टली 8 गेम में नहीं कर सकते यार, 8 गेम में, 8 गेम में पॉसिबल नहीं है टू पुट समवन ओवर एरिक टेन हाग, सिंपल। नहीं नहीं भाई, कोई प्लान व्लान नहीं है। प्लान तभी होगा व्हेन वी हैव क्लैरिटी। Beckham ambassador is just in the air. As I said, it totally depends. I don't see us doing a lot. You know, कोई क्लब 50-55 मिलियन जितने हम मांग रहे हैं उतने देगा भी या नहीं, लेट्स सी। भाई 90% डन कुछ नहीं होता, 90% डन कुछ नहीं होता। ब्रेमर ने कुछ नहीं उखाड़ा भाई, ब्रेमर ने कुछ नहीं उखाड़ा भाई। ही हैज बेसिकली स्टॉल्ड इट, ठीक है। ही हैज नॉट डन एनी फेवर्स, he has stalled it, and he's just trying to find different ways of keeping them at the club and being at the club. विजय भाई at this point of time definitely a bit better, थोड़ा सा गला और सही हो जाए तो मजा आ जाए, but rest is fine. Exactly भाई, मैंने तो बोला ही है, जब तक वो चीज तुम्हारे पास होती है ना, यू पीपल आर लाइक अरे कुछ नहीं है भाई, मजाक है। तो वही वाली बात है फिर। बल्लेबा भाई, दे स्काउट देयर प्लेयर्स प्रॉपर्ली। उनको पता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग दे विल हैव टू कीप ऑन कमिंग विद टॉप टैलेंट्स। इनासी और सिल्वा भाई, मेरा बस चले तो आई विल टेक बोथ, एंड सेंसिबली वी नीड बोथ, ठीक है। वी नीड 2 सेंटर बैक्स टू मूव फॉरवर्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली भाई, लालीगा से कोई नहीं लाऊंगा भाई, मैं लालीगा से नहीं लाऊंगा मैं। लालीगा में खुद के कोई डिफेंडर नहीं लेते वो, दे आर कीपिंग देयर आईज ऑन डिफेंडर्स फ्रॉम फ्रांस एंड डिफेंडर्स फ्रॉम पोर्चुगल। मेरे को कोई नहीं चाहिए लालीगा से यार। all the young defenders, all the potentially highly rated defenders are in France, are in Portugal, are in Germany। एक दो जर्मनी में, ज्यादा नहीं। नहीं भाई, he did not play, वो खेला ही नहीं, इंजर्ड क्या होगा। एब्सोल्युटली भाई। भाई देखो वही वाली बात है, दे डू देयर होमवर्क। वो हमारे जैसा नहीं है कि अच्छा रैबियो 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 नहीं मिला तो साला किसी को भी उठा लो, ठीक है। सो दे डू देयर प्रॉपर होमवर्क विथ एवरी प्लेयर, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हर जो प्रॉपर टीम है, दे डू देयर बिजनेस इन दैट ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, हम तो जो बोलते हैं ना, बिन बिन पेंदी के लोटे, वो वाली हरकतें हैं हमारी। एग्जैक्टली इनासियो, हाँ, एलसीबी में और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मलासिया आई डोंट सी हिम गेटिंग बैक, ठीक है। I don't see him getting back on October 21st. I think he will be back after November, but let's see. Exactly. जाएंगे भाई, that's how they put up players in the squad, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ कि जिससे वो लिंक होता है भाई, उसको उठा लो।
डू द बिजनेस, द मोमेंट कोई प्लेयर लिंक हो रहा है ब्राइटन से, उसको उठा लो। सिंपल सी बात है। नहीं चाहिए भाई। अलावा को कौन पूछ रहा है 2023 में? अलावा को 2023 में कौन पूछ रहा है? I still feel that Mount's best position is on the right hand side. I have not been absolutely over the moon when he plays in the number 8 role. But let's see. Perfect Luke, perfect man. एनसीसो हाँ भाई, खेलता तो उसी रोल में है। सेम यार भाई, सेम यार भाई। it totally depends, as you said, with the ownership. ओनर्स बैक करेंगे तो भाई क्लब कैन डू वंडर्स भाई। दैट्स द थिंग, they took the stand, they got the penalty, which was, I think, was a very shady penalty against Brighton. नहीं भाई, लिवरपूल से देखो, लिवरपूल में क्लॉप का सिस्टम इज डिफरेंट, ठीक है। वो क्लॉप सिस्टम वाले प्लेयर हैं। ब्राइटन में जो डिजर्बी ने बना दिया है उसी में तुम्हें खेलना है। सिंपल सी बात है। क्लॉप तो फिर भी यार चेंजेस, चॉपिंग चेंजिंग करता है, क्योंकि वो देयर आर सो मेनी प्लेयर्स दैट साला एक बोल सकते हो कि बर्न आउट नहीं हुआ। बहुत सारे बंदे बर्न आउट हुए हैं यार। हाँ भाई, दर्शन भाई ना, भाई मैं वही बोल रहा हूँ। सी, व्हेन यू आर 19, व्हेन यू आर 20, अगर मैनेजर फील्स दैट यू कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ डिफरेंट रोल, तो वो मैनेजर करेगा। वो मैनेजर अपने आप को लेके कितना कॉन्फिडेंट है, वेदर ही कैन डू इट और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर। इट्स एज सिंपल एज दैट। गाइस, शाउट आउट देना बनता है। शिवम भाई थैंक्स अ लॉट, एलिसन थैंक्स अ लॉट, नियॉन भाई थैंक्स अ लॉट, देन वी हैव समीर भैया थैंक्स अ लॉट, दीक्षांत भाई, एंड वी हैव मरलीन एज अ 13 month member. So congratulations for being a member, Marlene. अच्छा भाई, तबीयत बेटर है, बट थोड़ा सा गला है अभी, जो कि 100% नहीं है। रेस्ट इज फाइन, मतलब वैसे एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा सा बस गले का है, एंड आई थिंक इट विल गो अवे। गले को लेके बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा भाई। चलो, हाँ भाई, दर्शन से आई मीन रेगुलर कांटेक्ट, मेरी आज ही बात हो रही थी। कल वी आर गोइंग टू हैव अ वीडियो मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड के ओवरऑल सीजन पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलो, गुड नाइट श्रीनिवास भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर joining in videos and regularly on in January. I will, but totally depends उसकी इंजरी का क्या सीन है यार। भाई देखो, कोई भी क्लब है, एनी क्लब विच रन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, वो बाकी क्लब से सीखेंगे भाई। दे विल टेक क्लूज ऑन हाउ टू मेक द क्लब मोर एफिशिएंट, अगर जहां वो सीख सकते हैं। So if we are linked to a particular player which they think can do them good, why not? They will do it. Shubhat bhai joining as a new member. Thanks a lot, Shubhat bhai. Vikram bhai, all good, all good. Finally तबीयत बेटर हुई है, so I am here. सब ठीक रितेश भाई, थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, रेस्ट ऑल इज फाइन। थैंक्स अ लॉट एली फॉर जॉइनिंग इन, गुड नाइट। हेलो रवि भाई। भाई आई डोंट सी हिम टेकिंग एनी जॉब एनी टाइम सून, मे बी शायद दूसरे कंट्री में ले ले।
You know, he will try. मेरे हिसाब से थोड़ा ईगो पे बात आ गई है उसके आफ्टर बीइंग सैक्ड so early with Chelsea. So let's see. Round of 50% यार, अभी भी 50% है. I still feel that if we have all the players fit, we can win at least 3 of the remaining 4 games. नहीं चाहिए भाई जाबी अलोंसो. कर सकते हैं यार, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन भी क्या है मैड्रिड के पास. If a player gets 20 goals, if a player feels, I have heard his interview. He is like, I want to be at the club. So why not? If he gets you 20 goals, willing to stay on the bench, put that experience to use. 36 years old. Why not? They won't take him. Trust me, they won't. Hey, David. We were just talking about 2-3 things. We also talked about Arsenal's win and return date of certain players that we have. We still don't know the exact dates, but in the next 2 to 3 weeks, we are expecting Ban Bisaka to return, Kobe Manu to return, Shaw to return next year. Next month, not this month. So within a 1 month time frame, we are expecting 3 to 4 players back. We are also expecting Regulion to be back in a week or so. So things are looking good, but then at the same point of time, we have to avoid injuries. We get 2-3 players back, we are getting 4-5 players injured. What's the point in that? It makes no sense to me whatsoever. Malasia, the last post I saw on Malasia yesterday, it said 3 weeks. And there was a photo of Malasia with a young fan where he talked about 3 weeks. So 3 weeks, that means he will be back next month after the game against City. They are kids. They are seriously 13-14-year-old kids. Licha, most probably Feb. I don't think we are going to now that the surgery has gone in. I don't see us going out and trying to pressurize. Yeah, 3 weeks. I saw that post. बिल्कुल भागेंगे भाई. भाई देखो, मैनेजर की पेडिग्री है ना. If a manager is not lucky with the injuries or lucky with the board, nothing can be done. Yeah, that's why I said I have absolutely not. I'm not 100% sure shot, but that was the last quote that I have seen. एक भी मैच मुश्किल लग रहा है, बट आई वोंट बी सरप्राइज, शायद एक निकाल ले. भाई प्रेफर्ड तो डलो ही था पहले भी. Then Dalo got injured and Van Bissaka took his chances. Now Dalo is taking his chances that Van Bissaka is injured. So let's see. It's a good healthy competition over there भाई. 50 भाई, 50 के ऊपर मिल गया तो बोनस है. 50 के नीचे नहीं करना चाहिए. Who will be back for Sheffield? Most likely Varane and most likely Regulion. कबड्डी तो भाई मजा आने वाला है वर्ल्ड कप के बाद. Nothing concrete भाई. We are getting linked with lot of Portuguese talents. So I'm not surprised that João Neves is one of the names which is in the mix as well. Yep. Sheffield hai. After that, I think we have Luton. Yeah. Sheffield, then we have Man City. Sheffield, then we have Champions League, Copenhagen, then we have Man City, and after that we have Newcastle. We don't have Luton. Luton is on 11th November. Before that, we have 5 games. CDM hai bhai. João Neves is a CDM. Not concrete.
not concrete, just news. Joao Polinia कब चला भाई? There was not a single report of Joao Polinia to United. Concrete report. Joao Polinia was going to just one club, that was Bayern Munich. Thanks, Sanket bhai. Good night. My De Bruyne is not there. De Bruyne is out for most likely the season. He is not going to play any part. Yep, Polinia was always going to Bayern. I have not seen a concrete report that suggested that Polinia is going to United. Never seen it. Guys, one thing which I always say, which I have not said for a very long time, the membership feature is available on the channel. Since we have 20 guys, if you want to try the membership, let me know. I will put up the link. Or even if you don't want the link, you can just easily check it out. All you have to click is on the join button just by the side of subscribe button. So check it out. Check out the perks. If you don't like it after a month, let me know. But at least try once, which I always say. Gonna miss Licha against Ireland for sure. Silva definitely. Foden always shows up against us. So Foden is there as well. So Rodri, he will be back. See, for me, Rabiot didn't make any sense apart from being a free agent, to be very honest. Mason Mount, I think we are still trying to figure out where to put him. And if we had to do the figuring out role after spending 60 million, then it makes no sense to me. Because he is not 100% your number 8. You cannot play unless or until you just tell him that, all right, you don't have to move from that position. You always have to be in that position. So few of the decisions I am really looking forward to see in a way that it is going to finally finalize. But let's see. Good evening, Anita भैया, कैसे हो? हेलो विशाल भाई, क्या हाल चाल? बताओ भाई, नाम याद करके बताओ. एग्जैक्टली भाई, मैं वही बोल रहा, इंजरी प्लेज अ पार्ट. I can understand 1 or 2 injuries, so David, I have followed his career, even through his PhD days. I never liked the player. And the reason being the attitude problem. नहीं भाई, एंजो को नंबर 10 खिला रहा है ना. एंजो को नंबर 10 खिलाएंगे, ये देखते जाओ भाई. As I said, I am not saying that chance मत दो, but neither Garnacho at this point of time nor Pelestri is a 90-minute player. हाँ, 60 minute खिला सकते हो Garnacho को. Give some sense to Rashford that either focus on the game or stay on the bench. That's it. नहीं भाई, healthy competition के लिए पैसा कहाँ है? You cannot have a healthy competition between 220 million goalkeeper. 45 ये 70 का कॉस्टा पड़ेगा. थैंक्स डेविड. तो बेंच करो, मुझे बेंच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. I have been saying this. I won't mind if we are benching the likes of Casemiro, the likes of Rashford, the likes of Onana, just to make them understand that, okay, you are not going to start 100% even if you shit on the pitch. Simple as that. ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें अभी चेल्सी भी ट्राई कर रही हैं. They also have injury issues. They also have problem with the players that they have brought in. ठीक है, यही होता है ना कि when at this point of time both are a banter club. Chelsea भी for different reasons, United भी for different reasons. So at this point of time, the best way forward for both the clubs, in my opinion, is to trust the manager and see where they take you. It's as simple as that at this point of time. चलो,
On this note, guys, I will see you most probably tomorrow. ठीक है, इंडिया का मैच मोस्ट लाइकली इस टाइम तक खत्म भी हो जाएगा, सो वी कैन टॉक अबाउट द गेम. एंड ऑब्वियसली फुटबॉल तो हम करते ही है यार बात, एंड फॉर यूनाइटेड देयर इज ऑलवेज समथिंग टू टॉक अबाउट. चलो दीक्षांत भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर चैट एज वेल. तो दीक्षांत भाई के लिए तालियां हो जाए यार थोड़ी. Nobody. I was taking a look at the list. It was around 100 players who are currently injured. Currently injured, the list is around 100 players. हाँ भाई, थैंक यू भाई. मैं वही बोल रहा हूँ, everyone can be on the bench if they are not up to the mark. I am all in for giving players a run of 8 games, 10 games. But then those who are sitting on the bench, I also want to see them. It's as simple as that. Chalo. Good night, guys, and see you tomorrow. Stay safe.